So we are doing D-block April shift JEE Main 2025 के क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये तुम्हारे 3D सीरीज दे रखी है। 3D सीरीज में वेनेडियम दिया है, कोबाल्ट दिया है, टाइटेनियम। सो आई टेल यू द निमोनिक्स टू लर्न द एटॉमिक नंबर। पहले हमारे पास है साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकल कॉपर जिंक। ये एक निमोनिक्स है एंड इसको यूज़ कर लो तुम 21, 22, 23, 24। तो सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है कि आर्गन सभी में कॉमन है और बैलेंस शेल है सिर्फ 4s2 एंड 3d। तो जितना 20 के ऊपर चल रहा है वो d में चले जाएगा, 3d1, ये हो जाएंगे 3d2, 3d3, d4, d5, सारे 3d हैं, 3d6। तो ये मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड बता रही हूँ ताकि तुम जल्दी निकाल लो इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेनेडियम +2 और कोबाल्ट। तो वेनेडियम +2 में क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, ये बचा 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड कोबाल्ट +2 में वी कैन रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन एंड वी गेट द 3d7। तो अगर तुम ऑर्बिटल्स में फिल करोगे तो तुम्हारे पास 5, 6 एंड 7, तो 3 अनपेयर्ड ही आ रहे हैं। मतलब वेनेडियम एंड कोबाल्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड दिए हुए हैं, पहले ही ऑप्शन में मिल गया है। बाकी में और चेक कर लेते हैं। सो टाइटेनियम एंड कोबाल्ट, टाइटेनियम +2 इज गिवन। टाइटेनियम +2 में हमारे पास ये तो 2 अनपेयर्ड एंड कोबाल्ट में हमारे पास दिया है +2, तो ये तो 3 अनपेयर्ड, तो ये गलत हो गया। आयरन +3, आयरन में हमारे पास ये है 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये 3d5 हो जाएगा और ये 0। क्रोमियम +2, क्रोमियम, ओके, क्रोमियम ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसको सही कर देते हैं पहले। सो आयरन +3 पर 3d5 ही बचेगा और क्रोमियम +2 पर 3d4 बचेगा। तो फिर से गलत हो गया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर कौन सा हो गया, 4। मेटल आयन दैट हैव द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम 4.9। तो ये याद रखो, ट्रिक है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतना ही वो डेसिमल में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। तो n = 4 पे हमें सेम आंसर मिल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं n = 4 पे क्या है। सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्रोमियम +2 है। सो इफ़ यू सी क्रोमियम +2 पे हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके बैलेंस शेल के और हमारे बचेगा 3d4 बचेगा। सो वी आर गेटिंग 3d4 यहाँ। सिमिलरली आयरन में अप्लाई कर दो तो हमारे पास बच रहा है 3d6, यहाँ पे 3d5, कोबाल्ट +2, 3d7, Mn+3, यहाँ से भी हम ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d4 हो गया। तो बेसिकली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी अगर बॉक्स बना के देखेंगे तो 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, B and E. So A, B, answer is 4. Given below are the two statements. Chromium trioxide is a strong oxidizing agent than molybdenum oxide. तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी चल रही है, +6 की, और यहाँ पर चल रही है दैट इज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट क्रोमियम O3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो ये बेसिकली करेक्ट है क्योंकि क्रोमियम जो होता है वो +3 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बजाय मोलिब्डेनम के। तो क्रोमियम इजीली कन्वर्ट खुद को रिड्यूस कर लेगा क्रोमियम +3 में कंपैरेटिवली मोलिब्डेनम से। सो दैट स्टेटमेंट इज राइट। Statement 2, they are saying the chromium 4 is more stable than molybdenum 4. This is wrong. Chromium 6 is more stable than the molybdenum 6. ये wrong हो गया है क्योंकि chromium 6 की जगह molybdenum 6 ज़्यादा stable होता है।
So answer 2 is wrong. So first is correct, second is wrong. Among scandium, Mn, cobalt and copper, identify the element with highest enthalpy of atomization. The spin only magnetic moment value of that element is in +2 state. Highest enthalpy of atomization cobalt की सबसे higher होती है, that is argon 3d7 now. So since +2 का charge लगा हुआ है, so that we can remove this to the 0, so it's become 3d7. So we have an unpaired electron is how many? Let's say 7 we pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Unpaired electron is 3. So around 3.93 answer will come, which is approximate when we put into the formula n plus 2 Bohr magneton. So around 3.87 answer is coming, which is equal to 4. The number of valence electron present in metal which has the lowest enthalpy of atomization. Just now we did this question. The number of valence electron present in metal, chromium, cobalt, iron and nickel which has the lowest enthalpy of atomization. Okay. So chromium has the lowest energy of the atomization. It has a 6 unpaired electron. So chromium is argon 4s1 3d5. 6 unpaired electron, answer is 3. So first transition series, M has the highest enthalpy of atomization in its series. One of its aquated ion Mn plus N exit in the linear green color. The nature of the oxide. Okay. So in 3D series, vanadium has the highest enthalpy of atomization and the color of the vanadium plus 3 is green. And since it is going to be formed V2O3, which is basic oxide. So answer should be 3. X is the number of acidic oxide among them. The primary valency of the cobalt is Y, the value of X and Y. Okay, so here the acidic is, this is basic, so that can't be answered. Vanadium trioxide is also basic. Chromium trioxide is acidic. Vanadium pentaoxide is amphoteric and Mn2O7 is also acidic. So basically we have a X value of 2. But we have to check the cobalt oxidation number. So let's write it. Cobalt, and this is ethylene diamine, En whole twice, thrice and SO4 whole thrice. So let's say this is X, this has the 0 charge, it has the -2. So X, 2X plus 0 minus 6 equal to 0. So 2X equal to 6, so X equal to 3. So since in the question they have taken oxidation number as a Y, so we got the Y value is actually 3 and X value is acidic oxide, which is 2. So here I'll write this is the Y value and the sum of that is 5. So your answer should be A. The correct decreasing order of spin only magnetic momentum ion is. Okay, so we will check if the more number of unpaired electron, that more magnetic momentum, less number of unpaired electron is a less. So copper plus is given. Copper is 4s1, argon 4s1, 3d10, plus is there, so 3d10. The unpaired electron is become 0. Copper is +2. +2 we can remove 2 electron from here. So this is become 3d9. So we will have unpaired electron 1. Chromium is 4s1 and 3d5, +2 is there. So we can remove electron. It convert into the 3d4. So N equal to 4. Chromium +3. So here we can remove the 3 electrons. So it's become 3d3. So N equal to 3. So basically that decreasing order, copper plus should come behind. So copper plus is coming behind. And then chromium +2 is on top, that is right. And so this is the answer. So question we have, A is reacting with NaCl in acidic medium. It will form the chromyl oxychloride and side product. Chromyl oxychloride is treating with the base and will give us the B. B in acidic medium will give us the C. So the number of terminal oxygen present in the compound C.
Okay, quite salt analysis based question or the chromium oxide की method of preparation है. So we will write the equation first. Cr2O7, that is the ore ion, when we are treating with the NaCl in acidic medium, it convert into the chromyl chloride. Later this, when you treat with the alkali NaOH, it gives us Na2CrO4. Further in acidic medium, it gives us Na2Cr2O7. And the structure of, so this is your C now, and that is your B. So we'll write the structure. Chromium is connecting with the oxygen, double bonded O, double bonded O. Here the oxygen minus and here oxygen minus. So the number of terminal is oxygen is 6 only. All the oxygen is a terminal, answer is 6. Only this middle oxygen is not a terminal, it's a bridge. So these 6 are terminal. The incorrect relation, the following pair in the relation to ionization enthalpy. So in ionization enthalpy, Mn, chromium, iron is given. So let's write Mn. Mn number is 25. So it becomes 4s2 3d5. Chromium is 4s1 3d5. So argon I am not putting here because it's a common thing. So 4s2 and this become 3d6, 26 number. This is 25, this is 24 and this is 26. So Mn plus 2, it's become 0, it's become exactly half filled, so it could be better. Iron plus 3, it's become exactly half filled. So we'll go with the option ways that here Mn plus 2 we are getting and the iron plus 2. So Mn plus 2 and iron plus 3 is better stable. Mn plus 2 is more stable. So they are asked the incorrect one, so we will go with the 4 number. And here the rest are right. Mn plus 2 is better stable than plus 1. Iron plus 3 is better stable than Fe plus 2. And the chromium plus is better stable than the Mn plus. Chromium plus is become 3d5, exactly half filled. So question we have, KMnO4 act as oxidizing agent in acidic medium. X is a difference between the oxidation state of Mn in reactant and product. Y is the number of d electron present in brown red precipitate formed at the end of the acetate ion test with the neutral ferric chloride, the value of NXY. So we must know that KMnO4 is changing its number in the acidic medium +7 to +2. रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट है. सो बेसिकली तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं यहाँ पे 5 चल रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द B. तो यहाँ पर एसिटेट आयन रिएक्शन हमें पता होना चाहिए. एसिटेट आयन व्हेन यू आर ट्रीटिंग विद द फेरिक in aqueous solution, it will give us the complex Fe3OH2, which is the brown red precipitate. तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चल रहा है +3 पर, तो +3 पे आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 3d5 and 4s0. So y is become 5. So x plus y value is, x is 5, y is also 5, answer is become 10.